Is it started from? Yes. Okay. Right. So this thing we are just appended to make it same. So 0001. This is a logical address and the physical address is this. Right. So we'll getting the physical address from Am I audible now? Yes, sir. Okay. So now let's take some example, right? And this is very important related to your exam and for gate perspective as well, right? So your logical address having 29 bits, logical address having 29 bits. Your page size is 4KB. Your logical address, or take a physical address, that is a 23 bits, right? Now this information is given. This information is given. So you need to identify how many pages are there in your logical address space, how many pages, how many pages in logical address space, same way how many pages in physical address space, right? How many entries you require in page table, right? Right now we are restricted to this process. And what is the page table size, right? And in terms of bytes, assume this in terms of byte. And how many bits are required for offset D? This we want to answer, right? This thing we want to answer. Okay. Now, how many pages in logical address space? How many pages in logical address space? Right. So number of pages in logical address space is equal to what you require. This is at the CPU side. So you are dividing your process, and the question is how many pages in logical address space means how many pages of your process. So you require the process size, right? So that process size is required. What is given? What is given? It is given that it's a 29 bits, means your logical address space, right? Your logical address space, that is having 29 bits to address each byte. 29 bits to address each byte, right? If you want to find out the size, suppose if I say
that for the process to address each byte, you require 3 bits. You require 3 bits to address each byte of that process. So how many bytes or what is the size of that process? 8 byte. Yes, right. So 2 raised to 3 bytes means it's a 8 bytes, 8 byte process. So same thing is given. So this bits, this is your logical address 29 bits, right? So we require first the logical address space means size of this logical address space, the size of this. So what will be the size of this? 2 raised to 29 Yes, 2 raised to 29. What will be here? bytes. Yes, bytes. So now we know the size 2 raised to 29 bytes, right? And in terms of equation, if I need to write, then how can I write? 2 raised to, what is here? LA 29 bits, LA bytes, right? Now, understood this thing? 2 raised to Yes. LA bytes. The number of pages in logical address space. Now you know the size. Now what you need to do? Divide with size of page. Yes, correct. So what you are doing? You are doing this logical address space divided by page size. And then you will get number of pages in logical address space, and that we will indicate as capital N, right? So your capital N is number of pages in logical address space, and that space you need to divide by page size to identify number of pages. So how will do? Now you don't require calci for this, right? Logical address space, that is 2 raised to 29 bytes. Physical page size, page size is 4 KB, 4 KB. So in terms of 2 raised to, what is this? 4, and this is 1K, and then byte. 2 power 12. 2 to the power 12, right? 2 raised to 2 into 1K, 2 raised to 10, right? So summation of power 2 plus 10, that is 12. 2 to the power 12 bytes. So byte, and when you have division, what it will give? The subtraction of power. So 29 minus 12, so it will give you 2 raised to what? 9 minus 2, 7, and 2 minus 1, 1, 2 raised to 17. Is there any unit here? No. No. Yes. There will be no unit because it's a number of pages. So how many pages? 2 raised to 17. So you are dividing those processes, and you can see how many pages of those processes. 2 raised to 17 pages, right? इतने पेज है 2 raised to 17. Okay, so now we have this. So we answered this question. How many pages in logical address space? So that is 2 raised to 17. Next question, how many pages in physical address space? So number of pages in physical address space. What do you need to do? Size of main memory divided by page size. Yes, size of main memory, that is physical address space.
divided by page size. What you know this page size, this thing page at physical address space. Do we have that in this? This is the data that is given. Do we have that thing? No. Can we get it from somewhere? Yes, from this. The same thing that we have applied here to find out LAS, logical address space, same thing you can apply for this to find out physical address space. Right? So number of pages in physical address space, right? That will consider as capital M. That is capital M. Okay. Are you getting the thing? Yes, sir. Okay, so now your PAS, physical address space. So PAS, same way I can write like this, that is 2 raised to 23 bytes, means 2 raised to PA bytes. So what is PAS? 2 raised to 23. 2 raised to 23 byte divided by what page size? Just we have written 2 raised to 12. Okay. So now we know this, that number of pages in physical address space is 2 raised to 11. And you can see the process 2 raised to 17. This is the bigger size, right? And one more thing is we don't require all the pages at the same time. So some pages which are required, that will be loaded into your memory, right? Right, so higher size process we can run into your memory, right? Because of this case and the concept of virtual memory, right? Now one more question related to this, that you know that logical address, right, is this, your physical address is this, and they are divided in two parts. Yes, P and D. D will be same here, and your F. This thing we know, right? P, D, F, and D. What is this P? This LA, it is given 29 bits. So this size is 29 bits, whole size. And that 29 bits is divided like this, P and D. Same way, PA, 23 bits. So it is also divided like this,
23 bits F and D. So there is a offset and there is something here P. So we are not means we'll find the easiest way is just find D, subtract from 29 and you will get P, but we'll not do that. Right? So understand this thing. What is P? What it say? P. Page P number. Page number. Okay, page number. Right. So P will give you a page number. Right. Means index. Means index this thing. Yes or no? This P will what it will give? It will give you the index. Means the entry. Right. So P depends on what? It depends on how many pages you have in logical address space. How many pages you have into logical address space. So it depends on this capital N. Yes. Yes or no? Yes, sir. So it depends on this capital N. P. But this is bits. Means the index it allocates, it says it in bits. So the pages I have in logical address space are 2 raised to 17. So there will be 2 raised to 17 entries in my page table. 2 raised to 17 entries in my page table. 2 raised to 17 entries. Right. And to differentiate each entry, how many bits are required? That is P. 2 raised to 17 pages I have, and to address these 2 raised to 17 bits and to give unique page and to give unique address to each page, how many bits are required? That is P. Remember this way. In your page table, how many entries or you can say indexes are there? So that depends on number of pages. And to give address to each entry and the unique address, how many bits are required? That is P. So what will be the P? $17. It will be 17 bits, your small p. Because 2 raised to 17 एंट्रीज है, उनको यूनिक एड्रेस देना है, तो मुझे कितने बिट्स चाहिए? 17. इतने बिट चाहिए, 17 बिट्स, राइट? 17 बिट्स चाहिए. ओके. सो स्मॉल p, अगर मुझे इसका इक्वेशन लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? Log n. Yes, log n. Only this? Base 2. Yes, base 2. Log n base 2. Now you see capital N. What is capital N? 2 raised to 17. So put it this. Log 2 raised to 17 base 2. So 17 will come here. 17 into log 2 by 2. So log 2 base 2, that is 1. 17 bits. Right? Plus, what is this? Displacement. That will look later. F. What is F? It depends on what?
Yes, it's 11 bits. Now tell me, what is small f? Log m base 2. Right, I have explained p. In similar way, you need to explain this small f. I'm not asking equation. Equation is correct. Log m base 2. But what is that small f? You need Frame not to number. remember this thing. Okay, frame number. I have explained this like this. This P indicates number of bits required to address each page in logical address space. हमें ये याद नहीं रखना है इक्वेशन, हमें ये याद रखना है कंसेप्ट, उससे ये इजीली हो जाएगा. Small f means it indicates the page number in your main memory, right? So what small f says, it says, and we are right now considering frame size equal to page size. So it says number of bits required to address each page in physical address space. Number of bits are required to address each page in physical address space. Right. So your physical address space, how many pages are there? 2 raised to 11 pages are there. And to address those 2 raised to 11 pages, we require 11 bits. Right. And this thing we can write in the form of equation like this. Small f is equal to log capital M base 2 plus your displacement d, and d will be same for this, and this same will be here. So what is displacement? First you need to tell me, then you will give me the answer. Number of bit requires to address number of Yes. blocks in the pages. Blocks. Not blocks, but like address. Okay, just correct it. Not block, not address. What is there in one page? Frames. In page. Okay. Frame Offset. size and page size is same, right? So what a page is? It's collection of your page is collection Offset. of. Offset is a term that is used in that. Suppose I say that like in terms of student, I am making a group of 4 student, and that is my page. Group of 4 students, that is my page. In that page, if I say 2, then that is offset. That is offset. But my page is collection of what? It's a collection of student. So your page is collection of what? Number of lines. Lines. It's a similar to block, right? That mostly used in like uh, when you studied CO and computer architecture. It's a similar to block.
Okay, now concentrate on this page size. What is that? What is page size? 4. So byte are the parts. Yes. Correct answer, maybe. Yes, it's correct. It's a collection of bytes. So in one page size, in one page, how many bytes are there? 4K. 4K bytes are there. So your page is collection of byte, right? Here it's a byte addressable. So each byte, for each byte we are giving the address. For each byte we are giving the address. So that is 4 KB. 4 KB each byte, right? In terms of 2 to the power, if I need to write, then same thing I can write like this, 2 raised to 12 byte, which you have written here, 2 raised to 12 byte. So your one page consists of 2 raised to 12 byte. Okay, now another thing, when the concept of byte comes, once you locate the page, एक बार पेज लोकेट हो गया उसके बाद ऑफसेट का काम आता है. अब वो बोलेगा कि ये पेज में कौन सा बाइट, अब वो बोलेगा ये पेज में कौन सा बाइट, राइट. मैंने ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट है, ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट लोकेट कर दिए है, राइट. ओके, लेट मी टेल द a good example. You have a ID number. Assume that you have ID number starting from 1 to 10, right? Same way IT branch also have ID number starting from 1 to 10, right? And there is a group of 4 students. Once I will locate the page, right, of C group to find out a particular student, what I will do, I will specify that this is the page. Now in that page it's a second, it's a second. So using this page and frame, what you are doing, you are locating that page, you are locating this page. Am I audible? Yes, sir. Yes. Okay, so once you locate that, in that page which byte, in that which byte, because you have 2 raised to 12 bytes, so to address that thing, how many bits are required? You have 2 raised to 12 bytes, और 2 raised to 12 bytes को मुझे अलग अलग एड्रेस देने हैं, तो कितनी मीन्स कितने बिट्स चाहिए? It's a 12, no, it's a 12 bits, right? 4 कब चाहिए? जब पेज साइज कितनी? 16 KB. 16 KB. Sorry, byte. 16 Yes. byte. When it's a 16 byte means एक पेज में 16 बाइट है, तो 4 बिट से हर एक को मैं अलग अलग एड्रेस दे सकता हूँ. 16 को मीन्स वन एक पेज पे आ गया, तब मैं 4 बिट से बोलूँगा कि कौन सा बाइट मुझे चाहिए, राइट. बट हियर वी हैव 2 raised to 12 बाइट्स, सो यहाँ पे 12 बिट्स. So in terms of equation, if I need to write, what I will do here, log base 2, ये तो पता है बिट्स निकालना है. यहाँ पे क्या आएगा? Page size. यस, इट्स अ पेज साइज. और सेम थिंग यहाँ पे अप्लीकेबल होगी, क्योंकि पेज साइज तो दोनों में सेम ही रहने वाली है. पेज साइज दोनों में सेम ही रहने वाली है, राइट. सो दिस फॉर्म, दिस होल थिंग विल फॉर्म your physical address, will form your physical address, right? So
दिस 11 बिट्स प्लस दिस 12 बिट्स, ये जो 12 बिट्स है वो पूरा क्या हो गया आपका फिजिकल एड्रेस. नाउ सम दिस 11 प्लस 12 व्हाट इज इट 23, 17 प्लस 12 व्हाट इज इट 29. सो सीपीयू जब भी जनरेट करेगा वो कितने बिट्स जनरेट करेगा 29 बिट्स, राइट, फॉर पर्टिकुलर प्रोसेस. और जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है वो कन्वर्ट करेगा उसको किस में 23 बिट्स में, फिजिकल एड्रेस में. उसमें ये जो ऑफसेट है वो एज इट इज़ रहेगा, राइट. मीन्स सपोज यहाँ से उसको 12 बिट्स सभी वन मिले तो यहाँ पे भी ये डी जो है वो 12 बिट्स सभी वन रहेंगे. पी जो है, राइट, कितने बिट है 17 बिट्स, उसको किस में होगा कन्वर्ट 11 बिट्स में. So the memory management unit will do this, right, using the help of page table. Okay. Now next question is entries in page table. How many entries? It depends on what. पेज टेबल में टोटल एंट्री कितनी आएगी, मीन्स कितना लंबा पेज टेबल होगा, वो किस पे डिपेंड करता है. Process, number of process. Yes. So your logical address space. The number of pages in logical address space. राइट, बिकॉज प्रोसेस को हम क्या करें डिवाइड करें किस में पेज में, हम पेजेस में डिवाइड कर रहे हैं. सो कितने पेजेस है उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी एंट्री होगी, राइट. सो नंबर ऑफ पेजेस आर 2:17. सो पे एंट्रीज कितनी होगी 2:17 एंट्रीज होगी. सो इतना बड़ा आपका पेज टेबल होगा वो प्रोसेस के लिए, राइट. ऑफसेट वी हैव आंसर्ड द क्वेश्चन. Now one thing is left is page table size, right. So ये page table है आपका, पेज टेबल कितनी एंट्री है वो आपको मिल गई 2:17 एंट्री है. सो ये 0 से स्टार्ट होगी, राइट, क्योंकि फर्स्ट एड्रेस क्या होगा 17 बिट्स ऑल 0, 17 बिट्स हो गए वो ऑल 0. और लास्ट में क्या होगा 17 बिट्स ऑल 1. और हर एक में एंट्री मीन्स अगर ये पेज मेन मेमोरी में है तो यहाँ पे एंट्री होगी, राइट, लाइक दिस विल बी देयर. अब मुझे इसकी साइज फाइंड करनी है, इसकी साइज फाइंड करनी है. और कंसीडर अभी कि जो एंट्री है उस पर हम डिपेंड करें, जो एक्स्ट्रा फील्ड है लाइक डर्टी बीट एंड वैलिड इनवैलिड बीट वो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, राइट, वो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये So मुझे multiply with page size. ये पेज साइज, ओके, लेट मी करेक्ट. सो सीपीयू जो है उसने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, पेज एंड ऑफसेट. ये लॉजिकल एड्रेस है, यहाँ पे फिजिकल एड्रेस है वो डिवाइड हुआ फ्रेम और डी में. डी तो सेम रहने वाला है, सो इट विल बी एज इट इज. अब ये पी को मुझे एफ में कन्वर्ट करना है, तो ये एंट्री उसके बेस पे है, जितने पेजेस होंगे उतनी यहाँ पे एंट्री होगी. सो उससे मुझे इंडेक्स मिलेगी कि ओके ये इंडेक्स है. उसके बाद क्या होगा, ये 17 बिट्स है, 17 बिट्स उसने कुछ जनरेट किया, सपोज 0 1 2 3 3 नंबर है तो 1 1 लास्ट 2 और बाकी सब 0 ऐसे जनरेट हुए, राइट. तो ये 17 बिट्स, ये बाकी के जो 12 बिट्स है, एज्यूम के फर्स्ट बाइट ही है
वो पेज में है, तो ये भी ऑल ज़ीरो, दिस विल बी ऑल ज़ीरो। और सेम वे यहाँ पे भी वही होगा, 12 बिट्स ऑल ज़ीरो, ये बाकी रहेगा। आपने इंडेक्स फाइंड कर ली, अब यहाँ पे कुछ होगा, ये क्या है? पेज टेबल में, F ओके, पेज टेबल में एंट्री कब होती है? जब वो पेज मेन मेमोरी में एलोकेट होता है। यस, जब वो पेज मेमोरी में हमें रखते हैं तब हम पेज टेबल में एंट्री करते हैं। मीन्स ये पेज जो है वो मेन मेमोरी में मैंने कौन सी फ्रेम में रखा, और हियर फ्रेम साइज इज इक्वल टू पेज साइज। सो यू कैन सिमिलर थिंक दैट कौन सा पेज, कौन सी पेज में मैंने रखा, ये पेज कौन से पेज में गया, राइट? तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? वही योर स्मॉल एफ, राइट, दैट इज 11 बिट्स। सो ये एंट्री क्या होगी? ये आपको 11 बिट्स देगी, 11 बिट्स, राइट। और वो 11 बिट्स जो है वो ये रहे आपके, और ये 11 बिट्स प्लस ये 12 बिट्स, ये क्या हुआ? आपका फिजिकल एड्रेस। सो अब मुझे ये पेज टेबल की साइज फाइंड करनी है, और एज्यूम यू वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम साइज। तो क्या हुआ? 2 रेज टू, 2 यस, power 17 into 11 इंटू 11 बिट्स, bits। राइट, इतनी हुई। और लेट्स एज्यूम कि हम इसको बाइट में कन्वर्ट करते हैं मैक्सिमम। तो ये 11 बिट्स है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइट्स में। सो ये 8 बाइट से ऊपर है। सो 1 पॉइंट समथिंग बाइट्स लिखने की वजह मैं लिखता हूँ 2 बाइट्स। इसको मैंने लिखा है, जस्ट 11 बिट्स को मैंने 2 बाइट लिखा है। तो मैंने ये साइज जो 11 बिट्स है, फॉर सिंप्लिसिटी आई हैव टेकन दिस एज अ 2 बाइट। So 2 raised to 17 into 2 byte, that is 2 raised to 18 byte. So 2 raised to 8, I can write like, आपको पूछा है पेज टेबल साइज इन बाइट, सो इतना लिख दोगे, that is also fine, right? Into 2 raised to 10 byte, this is 256 KB, 256 KB, right? 256 KB. Any सर doubt in this? ये इंटू 11 कैसे हुआ वो बताओ ना। क्या कैसे हुआ? मतलब 2 पावर 17 इंटू 11 बिट्स क्यों किए? ओके, सपोज मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि हम्म, मेरे पास 4 बॉक्स है, राइट, आई हैव अ 4 बॉक्स। सर ये 11 बिट्स की जगह पेज साइज मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए? नंबर ऑफ पेज, पेजेस इनटू पेज साइज। नंबर ऑफ पेजेस इनटू पेज साइज, ओके, ये करोगे तो क्या मिलेगा? तो 2 पावर मतलब 4 के भी इंटू 2 पावर 17 इतना साइज हो जाएगा। साइज ऑफ वो मिलेगा लॉजिकल। ये तो फिर ये LAS मिलेगा, मिलेगा। LS, ओके। बराबर, ये हो गया ना? हाँ सर। तो फिर, और हम पेज टेबल में मीन्स क्या करते हैं कि पेज टेबल में ये पेज मिला, वो इंडेक्स मिली, और फिर जो एंट्री है वो एंट्री में से मुझे क्या मिल रहा है? मुझे एड्रेस मिल रहा है। किसका एड्रेस? कि मेन मेमोरी में वो कौन से पेज में है,
ये मिल रहा है। ये पेज जो लॉजिकल एड्रेस का है वो मेन मेमोरी में कौन से पेज में है वो मुझे मिल रहा है। सपोज ये पेज है, ये पेज मेन मेमोरी में यहाँ पे है, मेन मेमोरी में, राइट। सो मैंने जब ये मेन मेमोरी में रखा तब मैं ये जो एड्रेस है वो एंट्री में डालूंगा। कहाँ पे? ये पेज में, कि 011 है जो पेज, 011 लास्ट जो बीट है वो क्या है? ऑफसेट। आगे का जो है वो क्या है? पी। ये पी है यहाँ तक, ये डी है, राइट। इसमें लास्ट जो है वो डी है, ये क्या है? एफ। सो मुझे ये मिला कि ये जो पेज है, यू कैन सी 011 दोनों में सेम ही नंबर है। सो 011 ये पेज फिजिकल मेमोरी में कहाँ पे है? तो मैंने जब उसको डाला तो यहाँ पे मैंने उसको डाला है, तो क्या नंबर है? 0100। सो यहाँ पे मैं एंट्री करूँगा पेज टेबल में 0100, बट कहाँ पे मुझे एंट्री करनी है? कि जहाँ पे ये इंडेक्स हो 011। सो 011 इंडेक्स यहाँ पे है तो उसमें मैं एंट्री करूँगा 0100। उससे क्या होगा? जब CPU लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा ये 0110, CPU ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया 0110। नाउ यू नो कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 3 बिट एंड 1 बिट। सो आगे के 3 बिट ये क्या हुआ? P, और ये डिस्प्लेसमेंट D, सेम डिस्प्लेसमेंट D यहाँ पे जाएगा, दैट इज 0। अब ये P 011 है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है F में, और F कितने बाइट है? 4 बिट्स है, बाइट नहीं बिट्स, 4 बिट्स है। सो वो कहाँ से होगा? वो यहाँ से मिलेगा कि ये 3 बिट्स हुआ, यहाँ से 011, यहाँ से मुझे मिला कि ये 011 पेज जो है वो फिजिकल मेमोरी में ये पेज में है 0100, मीन्स यहाँ पे 0100 में है, और उसमें कौन सा बाइट? सो 0 बाइट। सो दिस होल थिंग 0100 एंड दिस यू कैन सी 01000। तो यहाँ पे देखो वो सेम एड्रेस है, ये जो है 0110 उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया ऐसे, Yes, राइट। sir. Got it. तो यहाँ पे क्या आया? बिट्स फ्रेम, Yes, sir. तो वो मुझे आया बिट्स, राइट। और फॉर कन्वीनियंस ये 11 बिट्स है, उसको मैं 2 बाइट लिख रहा हूँ, इसको ही मैंने कन्वर्ट किया है 11 बिट्स को, राइट, फॉर कन्वीनियंस। सो 2 बाइट लिखा तो ये 2 to 18 बाइट्स हो गए, और उसको मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ किलो बाइट। एनी डाउट इन दिस? नो सर। Okay, so just take a note of this, or this is the example that you need to solve and need to come in next lecture, that your logical address, or you can say virtual address, that is 32 bits, and your physical memory, that is 64 MB. Page size is 4 KB, right? These are the information, and same this question you need to answer. Try to solve this example, and if you have any doubt, then we will solve in the next lecture, right? The So physical physical memory memory means same, your physical means what is address the value? space. What? 64 MB physical memory. Yes, 64 MB. Yes.
We are right now, for example, we are considering 64 MB. It's a mega. Any doubt अभी तक जो चला है उसमें? No, sir. Okay, so let's end तो this वो session. फिजिकल एड्रेस तो 26 बिट्स हुआ ना उसका, जो फिजिकल मेमोरी में से फिजिकल मेमोरी है तो फिजिकल मेमोरी, your RAM size, your physical address space, these are the same term. Your logical address, your virtual address, this is the same term. लॉजिकल एड्रेस स्पेस, वर्चुअल एड्रेस स्पेस, ये दोनों भी सेम हुई. Okay. Yes, sir. Okay. So solve this example, and if you have any doubt, then ask me in the next lecture. अभी तक इसमें कुछ डाउट हो तो पूछो. जो एग्जांपल दिया उसमें नहीं, जो मैंने अभी करवाया वो एग्जांपल में कुछ डाउट हो तो पूछो. No, then let's end the meeting.